तमाम तफसीलात। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से सनसनी मची हुई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जेपी नड्डा ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और हेल्थ मिनिस्टर राजैया से बातचीत करते हुए एक मसले के हल पर जोर दिया। आज केसीआर ने एरागड्डा में वाक़ चेस्ट हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना को डॉक्टर्स की सैरुकनी टीम रवाना कर दी गई है। ये टीम स्वाइन फ्लू के रोकथाम से मुतालिक मकामी डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए इस मसले को हल करेगी। दिल्ली से आई डॉक्टर्स की टीम ने गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किया। जेपी नड्डा ने बताया कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तेलंगाना के साथ मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। स्वाइन फ्लू से बचने से मुताल्लिक़ हैदराबाद की कोठी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर शांतार और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के 13 अजला में स्वाइन फ्लू से बचने से मुताल्लिक़ अवाम को अलर्ट जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी एक शख्स की स्वाइन फ्लू के सबब मौत वाक़ हो गई। मजीद 13 अफराद स्वाइन फ्लू से अभी मुतासिर हुए हैं। The measures the government of Andhra Pradesh has been taking across the state. There are selected few cases are reported so far in the 13 districts of the state of Andhra Pradesh. So far, 13 patients were tested positive for H1N1 influenza, out of which one patient from Prakasham district has died because of the infection. And taking into the consideration of what is happening around, the government of Andhra Pradesh has conducted a review meeting yesterday by the Chief Secretary of the state. Then all the heads of the departments at the Hyderabad level and the district level heads were instructed to conduct an awareness meeting first across the media people, so that a message will be given to the people on what is this problem, what is the volume of the problem, what are the precautions one has to take, what are the facilities that the government of Andhra Pradesh has made available in the public health institutions. So in medical college hospitals we have created screening centers where suspected people can go there, they can get tests done by the qualified doctors and receive some treatment. Then isolation wards were created in every teaching hospital and district level hospital with 5 to 10 beds available, especially dedicated for possibly infected patients who require hospitalization and treatment. And in those centers we have created adequate number of ventilators available for those rare unfortunate patients who may require ventilatory support. A good number of doctors, anesthetists, nurses, pediatricians were made available to attend on to these patients in these isolation wards. No, we are requesting you to spread the public health message, like children who are having a flu, whatever flu, even a common cold, they should not be sent to the schools. So mother should not be in a very natural tendency to turn even a small infections etc. to the schools. They should be given rest, they should be given a support to symptomatic treatment, and they should be given a good nutritious food, and they should be taking rest in the house. By doing so, one, this child is protected, and two, this child will not spread even a common viral infection to the other siblings in the classroom. And to people who are very sick, old people, pregnant women, people who are otherwise not healthy, like very advanced diabetes, kidney